missed playoffs. And then another great game came down to basically no time on the clock. Denver beating the Chargers 31-30. That was a crazy game. I actually saw the end of that game. Yeah, yeah, I couldn't watch that, but I was gonna hope. But I watched the Philly and Dallas. That was a good game. Yep. And then another divisional game out west. We had San Francisco, Seattle. San Francisco without Garoppolo. They gave a pretty good game. They lose 37-27 to Seattle, but Russell Wilson has just been on fire this year. Yeah, for sure. I think it definitely will be in postseason. Oh yeah, that was one of the games I got right last week. I missed quite a few, including this one. New Orleans at Chicago. I picked Chicago. Between New Orleans and Chicago, I can't pick them right for some reason. New Orleans beat Chicago 26-23. Okay, well that's pretty impressive too. I think that was I think I picked New Orleans. So. And then we had Dallas at Philly. Yeah, I picked Philly. To me, that was one of the games that were a pretty clear winner there. Philly gets the win 23-9. And I think they did very well, so as you can see. So let's catch up. What do you have for this week? So this week, Thursday night game, Tampa Bay is at the Giants. Or actually, I'm sorry. Tonight's game is Green Bay at San Francisco. That's gonna be a good game. Tampa Bay and Giants was the Monday night game, and Tampa Bay pulled that one out last week. But Thursday night tonight, Green Bay, San Francisco. I'm going to go with Green Bay. Yeah. Aaron Rodgers. I think we'll get the win this week, and I know it's at San Francisco, but San Francisco's without Garoppolo and some other key players. I believe they're tied in. Kittle is out as well, so I'm pretty sure Green Bay will get the win. Yeah, I think they will do well. I think Green Bay. I'm with Green Bay. And then we got a big divisional game here. It's at Washington, the Giants. This one was kind of a coin flip for me, but I'm going to go with the home team here, Washington. I think they beat Dallas pretty handily a couple weeks ago, so I think Washington will get the win. Okay. Yeah, I think Washington. That's a tough one for me. Yeah. Who they playing? They're playing the Giants. It's Washington and the Giants. Washington, I think probably. And then another interesting one. You got Chicago at Tennessee. Well, Tennessee regrouped from the upset last week. I'm hoping they do. I'm picking Tennessee to beat Chicago. Yeah. I'm with. I think, but it's gonna be a good game. Absolutely. And then we have another divisional game, Detroit at Minnesota. I went with Detroit last week, and it seems like every week that I pick Minnesota, they somehow figure out a way to lose. But I'm gonna pick them this week. I think Kirk Cousins has been playing better these last couple weeks. I'm gonna go with Minnesota, and I'm almost positive Matt Stafford is under COVID protocols, and I don't think he's playing this week. So yeah, I would go with the Vikings too. And then we have Carolina, Kansas City. This is, I think Carolina's been playing well, but they're not going to beat Kansas City, in my opinion. It's Patrick Mahomes. And then, Kansas City's at home. I think Kansas City will get the win. Yeah, I think so. And then we have Houston at Jacksonville. These two teams both are struggling. But I'm going to bet my money here on Houston to beat Jacksonville. I don't know who you got, but yeah. I think I would concur with that too. And then Baltimore at Indy. This is going to be a really good game. Yeah, probably the game that I'll keep my eyes on most this week. Indy come off a really good win last week against Detroit. Baltimore suffered a close loss to Pittsburgh. This right here could be an eventual playoff matchup. I'm going to go with Baltimore, even though it's at Indy. I'm picking Baltimore. Okay. Yeah, I think, and it is very interesting, that they used to actually be part of Ravens, right? They moved from, Baltimore years ago. And that rivalry probably exists. So that's going to be a good game. Should be a good game, and, again, it could be a potential playoff matchup. And then another really interesting game, in my opinion, it's
And a good NFC team against a really good AFC team is Seattle at Buffalo. I'm going to go with Seattle, but this game could go either way, I think. Yeah. Well, Seattle, I won't bet against them. I think he's looking really sharp and he's doing really well. Yeah, he's looking like potential MVP this year, Russell Wilson. So, and then Denver, Atlanta. These two teams both are, Denver won last week late, last seconds. Atlanta beat Carolina last Thursday. I'm going to go with Atlanta, but this was another game that I can see going, kind of either way. So. Yeah, that's gonna be a good game. But I think I'm with Atlanta. So. And then we have AFC West divisional game. You got the Raiders and the Chargers. Well, I don't know what you think, but Raiders probably. Yeah, I think I'm going with Vegas. Even though I think it's at the Chargers Stadium, I'm still gonna go with Vegas. Yeah. And then we have, I think, the easiest game to pick of the week, Pittsburgh at Dallas. I think Pittsburgh will go 8-0 with an easy win at Dallas. Unless something crazy happens there, I don't see that any other outcome but Pittsburgh big over Dallas. And that, speaks me for the postseason. I have feeling that it's going to come down to Pittsburgh, Kansas City. So. Yes. Very possible. And unless, and then they have to probably come up with whoever wins. Yes, next game very interesting. Tua, I don't know how to say his last name, Tagovailoa, and Arizona's Kyler Murray, both similar quarterbacks. Tua gets his win last week. Miami's pretty impressive. This game was very back and forth, in my opinion. I ended up going with Arizona, but I could see it going Miami's way, but I picked Arizona. I don't know who you're going to go with. Well, I would do Miami, so that's it. Okay, so one of us will win, unless it's a tie. Unless it's a tie, so that's it. And then another very interesting game, New Orleans and Tampa Bay. I'm going to go with Tampa Bay. Tom Brady has been, the last couple weeks, getting the chemistry back, and I think Antonio Brown may be playing this week for the first time, but he was with Tom Brady in New England for about 8 games. I think Tampa Bay will win this game, but this was another game. This week to me is one of the toughest weeks we had with the picks. A lot of potential close games, but my gut told me to go with Tampa Bay. So that's what about New Orleans? I would just go. I mean, the quarterback is really good, and I don't know. Tom Brady probably. You got Drew Brees, Tom Brady. Well, it's going to be a tough one. I think this will be a real close contest. Yeah. So you got to pick one. So I'm going to pick Tampa Bay. So how about you? Who you think? I would go with New Orleans. Okay. And then we have, to me, the dud of the week, and it's on a Monday night. You got New England at the Jets. Jets have the potential to go 0-16. They've been struggling pretty mightily. I know in previous shows we talked about Adam Gase and the potential firing. He's still there. I think he gave up his play calling responsibilities, but it doesn't seem to be helping at all. But to me, this one, I think New England get a win this week. Yeah, I think so. I think they will probably win. You're right. So I think so. And you think it'll be high scoring? Maybe 30. New England Jets. I think I picked 40 points, and I think that's probably a stretch. We're probably looking at maybe 23-10, maybe. I don't think the Jets is going to score many points. New England, I think last week they got 21 points, so 21-10, 21-7 maybe, and I don't know why I picked 40, but I did already sent my picks and scoring. Oh, you already? Yeah. I would go with 30, 35, 32 maybe. Yeah. But I don't think it'll be a very high scoring game. No, I don't think so either. But anyway, that's what it looks like this week.
What do you anticipate? Any upsets this week? Well, I think the New Orleans, like you said, that's the one gonna be a game to watch. Yeah, there's several games this week that I'm going to have my eye on. Tonight's game is going to be a good one, Green Bay, San Francisco. Yeah. And Seattle. Oh, yeah, absolutely. Seattle, Buffalo will be a good one to watch. And then Miami, Arizona, and New Orleans and Tampa Bay. I think those are my top 4 games this week. Yeah, I would concur. Just, and let's see what comes up with that. So any other things you think we should be looking for this week beside upset in terms of injuries, you think? Well, I mean, injuries definitely can happen all throughout the year. Cleveland had a scare last week with Myles Garrett. I think he injured his left knee early on in that game, played very sparingly. Especially this time of year, the weather's getting worse, colder. You can have the snow, rain, so field conditions. And then players, slowly kind of deteriorate through the season. It's a long grind of a season, so injuries, any team's away, you could go from a Super Bowl contender to not making a playoffs with losing your quarterback, as you guys saw last year with Ben. Yeah. So you never know. You hope that no team is going to, suffer those kind of major injuries, but that's all part of the game. So yeah, that is. Well, that is with that. I think we have a few callers calling in, so we can check with them. Let's see here. We got a caller, Jamie. How are you doing? Hey, pretty good. How you guys doing today? Good. Hey, we got your opinion on certain games, man. So let's see what you have in pocket. So we picked 3 games that kind of piqued our interest this week. The first one is tonight's game. Green Bay is at San Francisco. What are your thoughts on that one? I think I'm going to go with Green Bay. I think they're having some trouble out in San Francisco. The quarterback and coach ain't on the same page, and I was reading some about that today, and maybe looking to trade Garoppolo after this year. So I don't know. Green Bay's awful good. I know San Francisco's good, but I'm going to go with San Francisco. I mean Green Bay. I'm sorry. Yeah, that's what we both think. Green Bay as well. Yeah, and then the second game, it's a NFC versus an AFC. Both of them are good. Seattle at Buffalo. That is a tough one to call. Me personally, I think right now the AFC North is probably the best division, and Buffalo's not because they're close to that area, but Buffalo has been playing great, especially at home. It's going to be probably cold up there. I don't know the weather yet, but I'll probably go with Buffalo at home. Okay, I think I picked Seattle. That was a coin toss for me. Yeah. And then our final game, we got New Orleans at Tampa Bay. That's tonight, right? No, that's Green Bay, San Francisco. I think New Orleans, Tampa Bay might be Sunday night. Okay. New Orleans and Tampa Bay. That's rough to call. It's at Tampa, right? Yes. Tampa Bay pulled out a good one at Chicago last week. I think it was last week, if I'm not mistaken. Yeah. Or maybe it was against the Giants. I don't know. Giants, Yeah. Yeah. I'm telling you, they look good. The Giants actually looked decent that night, but at Tampa Bay, I'm going to have to go with Brady and his bunch. They just got, I don't know if he's eligible yet, Antonio Brown, yeah. Brown. Yeah, we don't know if he's eligible. He's got Gronk, Antonio Brown, Mike Evans, and the other receiver. They are loaded to the gill. Plus Leonard Fournette and the other running back. Yep, they should be tough to beat. I think we both picked Tampa Bay as well. So. Now, I'm not taking nothing away from
New Orleans, because I mean, anytime you got Kamara and Breeze on the same team, you got a chance. Absolutely, that's definitely a good team. I think New Orleans beat them earlier, but I think Tampa Bay's finally hitting their stride. Yeah. You know, getting the chemistry back. But you know, a lot of it goes into too if these teams are allowing fans into their stadiums. I know some teams that are getting fans into their stadiums are playing better, but others that are getting fans in play worse. I don't know, like Cleveland last week had fans in and played terrible. Yeah, I think that last week they played pretty terrible. So I'm going to blame it on the weather, but we'll find out after their bye week. What? That's Cleveland, Ohio, man. They gotta have to get used to that weather. It's like playing in Green Bay. Absolutely. You gotta suck it up and play. But yeah, I'm like you. I hope it was just their bye week, or I hope it was just last week and not a repeat of week one. And hopefully we can regroup and get back on the right track. Yep, that's what we hope. But anyway, we thank you for the call, buddy. Thank you, buddy. Thank you, guys. Take See care. you next time. Take care. Thank you. Thank you for watching our show. Please give us a feedback and also send us email, Twitter, whatever you like. So also, Brian, what do you think will be the final game to watch? One game if you have to. If I only had to pick one game this week, I think I would probably go with the Seattle and Buffalo game. I think that's the game that kind of, piques my interest the most. NFC, AFC matchup. Both teams looking pretty tough this year. So if I had to choose one game, that's what I would pick. Yeah, I agree. With that in mind, thank you for watching our show. Give us feedback and take care. Thank you. Thank you. Okay. So you say come in the middle, right? Yep. Okay. And I'm kind of slowly laid back. okay. Okay. There you go. Okay. Now you're in the middle. Okay. Look at that. Okay. Oh man. Professional. Professional. All right. Hi, I am Sherry Nelson, and I hope you keep watching and enjoying Lifestyle TV Channel USA. सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं आमना इनाम, आपके साथ हंसते हंसते और आपको खुशामदीद कहते हैं फ्राइडे फ्लेक्स में। आज का ये प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई मस्ती, बहुत सारी कुछ आपको देखने को मिलेगा इस प्रोग्राम में। जैसे हमेशा की तरह वादा निभाती हूँ कि हर हफ्ते आपके लिए एक नया टैलेंट लेकर आऊँगी, कुछ नए सितारों से मुलाकात कराऊँगी, कुछ अच्छे ऐसे दोस्तों से मुलाकात कराऊंगी, उनकी जर्नी को शेयर करूंगी आपके साथ। इसी तरह की आज एक पर्सनालिटी मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगी, लेकिन सबसे पहले हमने अपने हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ, एक अच्छी
अक़वाल ज़री को ऐड करेंगे इस प्रोग्राम में। और वो अच्छी बात ऐसे है कि जब अल्लाह ताला, जब रब, ऊपर वाला आपके हिस्से में कोई पथरीले रास्ते लाता है, आपके लिए कोई मुश्किल रास्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो उससे कभी मत घबराइए। उन पथरीले रास्तों के साथ ऊपर वाला आपको मजबूत जूते भी देता है उन रास्तों पे चलने के लिए, ताकि आप हमेशा डटे रहें, अपनी हिम्मत का दामन ना छोड़ें, रब की रज़ा में राज़ी रहें। इसी तरह अपनी हिम्मतों को बरकरार रखें और उन पथरीले रास्तों पे चलने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ऊपर वाले की ज़ात आपके साथ है। हमेशा अपने इरादों को बुलंद रखें और अपने हौसलों को बुलंद रखें। अगर आपको आज की अच्छी बात, ये प्यारी बात आमना इनाम की तरफ से पसंद आई हो तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरे उन तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया जो हमेशा, जिनकी सपोर्ट के बिना हमारा ये प्रोग्राम अधूरा होता है। उसमें 5 तारा रेस्टोरेंट, उसमें लकी गिल जी न्यूयॉर्क से हमारे साथ, हाइप एंटरटेनमेंट, इन सब लोगों का ये वो नाम है जो फ्राइडे फ्लेक्स के पीछे हमारे एक सपोर्ट बनकर खड़े हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए हमेशा अच्छे से अच्छा प्रोग्राम, अच्छे से अच्छा काम लेकर आते रहें। और अभी आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगी और आप सबकी मोहब्बतों को बटोरते हुए मैं आज की अपनी उस फनकार दोस्त को, बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, बहुत ही प्यारी चुलबुली सी ने हमारी राइजिंग स्टार वेलकम कहेंगे, अमीरा मीर। अस्सलाम वालेकुम अमीरा, वेलकम टू फ्राइडे फ्लेक्स शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके शो में यहाँ लाइव बैठी हूँ। और बिल्कुल जी, हमारे लिए भी बहुत ऑनर की बात है आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पूछना चाहूँगी अमीरा, आज आप हमें कौन सी सिटी से ज्वाइन किए हुए हैं, कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आज? हम आपको आज ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जिसने लाहौर देखा नहीं वो जमा नहीं। नहीं जी, एक मिनट, अगर आप इसको पंजाबी में बताएं ना सही तरीके से कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया ओ जमया नहीं, तो फिर जमया नहीं। पंजाबी बहुत खराब है। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा मजाक बन जाए पंजाबी का, इसलिए मैंने सोचा कि आप भी बोल रहे हैं इसको। ओके, तो आप किस फैमिली से बिलोंग करती हैं? आप पंजाबी नहीं है लेकिन आप सेटल लाहौर के अंदर हैं। जी, मैं लाहौर मूव हुई थी एजुकेशन के लिए। अच्छा जी। और बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो मुजफ्फराबाद से है, कश्मीर से हूँ मैं। ओके, बट अब मैं पंजाबी बन चुकी हूँ, आप अभी देख सकते हैं। जी। वैसे भी पता है, लाहौर के अंदर रहते हुए कोई बंदा मेरे ख्याल में अच्छे मज़ेदार फूड स्ट्रीट के चस्के हों, ढाबे के चस्के हों, मज़ेदार रेस्टोरेंट्स के चस्के हों, हो नहीं सकता कि बंदा लाहौर में जाके अपने आप को जनाब इतना खाने पीने से पीछे रह सके। क्या पीछे नहीं रोक सकता। मेरा भी ऐसा था कि जब मैं आई थी स्टार्ट में, so I was like 47 kgs and now I am 52। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कंट्रोल करने की, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि मेरा 56 पे पहुंच गया था वेट। बट क्योंकि मुझे इस फील्ड में आना था, स्क्रीन पे आना था, अब मैं कंट्रोल कर रही हूँ काफी हद तक। बिल्कुल, स्क्रीन पे आने के लिए सबसे बड़ा जो है वो ये वेट का ही एक इशू होता है कि वेट आपका कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपको खूबसूरत लगना है अपने चाहने वालों के लिए, अपने देखने वालों के लिए, आपके फैंस के लिए, जो आपके लिए इस वक्त सबसे बड़ा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा उनकी अहमियत होती है, उनकी फीडबैक की बहुत अहमियत होती है। तो अमीरा, मैं चाहूँगी सबसे पहले हम आपके अभी रिसेंटली गाना लॉन्च हुआ है, अब मैं कुछ पहले 2 लाइंस प्यारी सी अपनी सुरीली सी खूबसूरत आवाज़ में हो जाएं और उसके बाद आगे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हैं। ओके, सो मैं आपको अपना ही सॉन्ग सुनाऊं या कोई भी सुना सकती हूँ? सबसे पहले मैं चाहूंगी आप मुझे गीत सुनाइए जो आपका भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। okay. आपके ही एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग जो रिलीज हुआ है वो सुनाइए। जी, फर्स्ट सॉन्ग है। दिल की पनाहों में छुपा ले, ना दरमियां हो दूरियां, ना फासले, दस्तक हुई है इस दिल पे, दरवाजे पे देखा जो तू था सामने, अनजान से रस्तों पे था ये दिल मेरा चल रहा, मेरी धड़कनों ने आज ये तेरे दिल से है जाके कहा, दिल के
पनाहों में छुपा ले, ना दरमियां हो दूरियां, ना फासले। ब्यूटीफुल, क्या बात है जी, क्या आवाज है अमीरा की, बहुत खूबसूरत आवाज। पता नहीं अभी कैसा गाया जा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टाइम बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कि बहुत मज़ा आया आपका ये गाना सुन के। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से, फैंस की तरफ से? अब बहुत अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारा काम हमें लगता है कि बाकियों से हटके था। हमने इसे कोशिश की है डिफरेंट बनाने की इसको, क्योंकि हमने स्पेनिश म्यूजिक दिया है और उसके साथ साथ स्पेनिश म्यूजिक के साथ आपने उर्दू लैंग्वेज यूज की है। सो काफी डिफरेंट हमें मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो ये पूछना चाहूंगी कि इसको लिखा किसने है, इस गाने के पीछे आपकी टीम में कौन कौन था, जरा मैं चाहूंगी कि आप उन सब नाम का जिक्र करते हुए चलिए। बेसिकली इस गाने के ऊपर, इस म्यूजिक के ऊपर वर्डिंग कुछ और थी, बट मेरे ही एक बहुत चहीते फ्रेंड ने मेरा सॉन्ग किसी और को आगे सेल कर दिया। यू नो पाकिस्तान में क्या होता है कि लोग आपका गाना सुन के आगे कहीं फॉरवर्ड कर देते हैं और लीक कर देते हैं। तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारा गाना ऑलरेडी चोरी हो चुके हैं। उसके ऊपर फिर हमें दोबारा से वर्डिंग लिखवानी पड़ी। ऑल्दो कि जो पहले वाली वर्डिंग थी वो मेरी अपनी थी, मैंने खुद गाना लिखा था, बट उसके ऊपर फिर हमें एक और राइटर से गाना लिखवाना पड़ा। तो जो न्यू वाले राइटर हैं उनका नाम है मुबशर हसन साहब, जो कि बहुत ही फेमस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे और भी गाने लिखे हैं। सो उन्होंने लिखा है। बाकी मेरे टीम में होते हैं, आपने देखा होगा हमारी एक टीम है HM एंड कंपनी के नाम से। वो न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं। जैसे उन्होंने मुझे ढूंढा, फाइंड आउट किया न्यू टैलेंट को, उसी तरह इस कंपनी में और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं। तो बस उनके साथ मैं काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। अभी इंडस्ट्री में तो कदम रख चुकी हैं। इंडस्ट्री में कदम जब इंसान रखता है, बहुत सारी ऑफर्स, बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं। आपको अब तक कौन से डायरेक्टर्स, कौन से प्रोड्यूसर्स, कहाँ से, कौन से चैनल से ऑफर हो चुका है? काफी सारे चैनल्स जो कि हैं यहाँ लाहौर में, वहाँ से ऑफर्स आ रही हैं। यहाँ पे यू नो बट के एक्टिंग का काम इतना ज्यादा नहीं है, म्यूजिक का ज्यादा काम है हमारे पंजाब में। बट मुझे कराची से बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं और मैं डे आफ्टर टुमारो कराची भी जा रही हूँ इस सिलसिले में। आपने अगर इसकी वीडियो देखी हो तो आपको फील हो रहा होगा कि मैंने जहाँ गाया है उसके साथ साथ मैंने एक्टिंग बहुत अच्छा किया है। मुझे एक्टिंग की तरफ से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और कराची से एक्टिंग के हवाले से बहुत ऑफर्स आ रही हैं। हम देखते हैं कि किस फील्ड में मैं जाती हूँ। देखते हैं कि अमीरा एक्टिंग के प्रोफेशन को चूज करके आगे बढ़ती हैं या सिंगिंग और एक्टिंग दोनों को साथ रखेंगी। और इसके लिए मैं सब अपने देखने वालों को चाहूंगी कि स्टे ट्यून, क्या होने वाला है। चलते हैं अमीरा, बिल्कुल चलते हैं अब अमीरा की तरफ आगे बढ़ते हुए कि और हमें और क्या क्या धमाके भी दिखा रही हैं, आगे कौन कौन सी चीज़ें सुनाने वाली हैं और हमें कौन कौन सी अपने इस जर्नी को लेके हम मज़ीद इनसे बातें पूछेंगे। तो अमीरा बताएं आप मुझे कि बचपन से शौक़ रखती थी, बचपन से शौक़ था सिंगिंग और एक्टिंग इंडस्ट्री के अंदर आने का, या कैसे शौक़ पैदा हुआ? ये शौक ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई भी लड़की पैदा होती है, और ख़ास तौर पे मैं कश्मीर से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, और क्योंकि मैं पढ़ने के लिए आई थी तो बस पेरेंट्स को यही था कि बस लड़की है तो डॉक्टर बनेगी। मैंने भी यही सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। बट जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी लेवल में आई, मैंने लाहौर के ऐसे चाम को देखा। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शोज, कॉन्सर्ट्स वगैरह हुआ करते थे। तो अचानक ही इस चीज़ की तरफ मेरा रुझान हो गया, मुझे खुद नहीं पता चला। फिर मैंने शुरू में छुप छुप के गाना शुरू किया और एक्टिंग प्लेस वगैरह शुरू किए, और यही था कि मैं बस यूनिवर्सिटी लेवल तक ही करूँगी, लेकिन प्रोफेशनली इसको मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। बट उनको पता चल गया, यू नो फैमिली से कोई बात छुपती नहीं है। सो ये फैमिली से बात छुपी नहीं और उनको पता चल गया। तो शुरू में बहुत गालियां पड़ी ओके,
यहाँ पे अमूमन पढ़ती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर उन्होंने देखा, पहले उन्होंने सोचा कि मजाक करिए, गाना वाना नहीं गा सकती, कि झूठ बोल रही है। बट उन्होंने जब यूनिवर्सिटी में आकर बच्चों से सुना कि बच्ची में वाकई टैलेंट है, सो उन्होंने कहा हमें भी तो अपना गाना सुनाओ। फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा वाओ, गा सकती है बच्ची, गा सकती है फिर बच्ची। तो आहिस्ता अभी आहिस्ता हो गया। अभी ये बताएं कि फैमिली की तरफ से कितनी सपोर्ट है, फैमिली में कौन कौन से लोग हैं जो स्पोर्ट के साथ साथ आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं? वैसे तो जो सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ मेरे अपने सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स हैं। बाकी जो मेरी फैमिली है वो अभी भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सपोर्ट नहीं करती। बट जैसे ही मेरे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती जा रही है। शुरू में तो मेरी फैमिली की तरफ से, लाइक मेरे अपने पेरेंट्स और बहन भाइयों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं था। बट जो आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, पूरी फैमिली, खानदान जिसको आप बोलते हैं, उसकी तरफ से बहुत इशू रहा है। लेकिन जैसा ही ये मेरा प्रोजेक्ट आया फर्स्ट दिल की, उसके बाद काफी तरफ से मुझे कॉल्स आई हैं और मुझे काफी ज्यादा मुबारकबाद मिली है इस चीज की। तो मुझे लगता है कि मेरे एक दो और अच्छे काम अगर ऐसे हो जाते हैं तो वो सारा मामला सेट हो जाएगा। ओके, सो अमीरा मीर कितनी हद तक अमीरा मीर को हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से बहुत इंस्पायर है? सोशल मीडिया में जो न्यू चीज़ें आ रही हैं एक्टिंग को लेके, टिकटॉक स्टार्स देखने को मिल रहे हैं बहुत। हर लड़की ही आज अपने घर में वीडियो फोन्स के साथ वीडियो बना के स्टार है, एक स्टार है। तो मैं किस हद तक कह सकती हूँ कि अमीरा मीर भी उस सोशल मीडिया की उस प्लेटफॉर्म से बहुत मुतासिर हैं और उसके बाद ही अमीरा मीर ने ये अपना प्रोफेशन चूज किया? किस हद तक ये बात ठीक है? किस हद तक ये बात ठीक है? जी मैं बिल्कुल मानती हूँ। शुरू में जब ये टिकटॉक आया था तो मुझे लगता था कि ये बहुत ही फजूल ऐप है, क्योंकि अचानक ही जैसे शहद होते है उसके ऊपर या मीठा होता है उसके ऊपर आके मक्खियां बैठ जाती हैं, ऐसे ही था। हर बंदा आ रहा था, हर बंदा उस पर कर रहा था। शुरू में मैंने भी सोचा कि इसको ट्राई किया जाता है। अच्छा। बट जब मैंने देखा कि पूरी दुनिया ही आ गई है इस पे, मैंने कहा कि इंसान को कुछ डिफरेंट काम करना चाहिए। मैं क्या बाकी हर बंदे की तरह इस पे आ गई हूँ। सो मैंने इसको फिर छोड़ दिया। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला थोड़े टाइम के बाद कि वो लोग कहाँ तक पहुंच गए हैं, और अब मैं उनको देखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं भी उस टाइम पे इसको कंटिन्यू करती और मैं भी शायद आज टिकटॉक स्टार होती, क्योंकि एक्टिंग तो मैं अच्छी कर लेती हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ पे इतना फोकस नहीं किया, और जिस वजह से अब मैं उनको देखती हूँ कि वो क्या सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और लोग क्या उनके इस बात को क्या फोटो इस बात से मैं आपको कहूंगी कि देखिए, मैं खिलाफ नहीं हूँ टिकटॉक स्टार्स के, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, उनके बारे में बुरा नहीं कहती हूँ। लेकिन मैं अपनी इंडस्ट्री के स्टार्स, जो हमारी इंडस्ट्री है, उनके आर्टिस्ट के साथ हूँ कि हर बंदा आर्टिस्ट नहीं बनता। ये तो अब आप खुद भी इस इंडस्ट्री के अंदर है। आर्टिस्ट कहलाए जाना एक लेवल की बात है। एक खाली हम लोग टिकटॉक स्टार्स को टिकटॉक स्टार्स कहते हैं, हम उनको आर्टिस्ट नहीं कहते, हम उनको एक टिकटॉक स्टार्स ही कहते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का एक लेवल है, सिंगर का एक लेवल है, और उसमें कुछ टैलेंट है। आप खाली लिप सिंग करके परफॉर्म कर देना, इट्स नॉट, आई गेस कि आप कह सकते हैं कि ये कुछ खास टैलेंट है। देखिए, आर्टिस्ट तक पहुंचना बहुत दूर लेवल की बात है। तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये टिकटॉकर्स ने ना कोई मेहनत की है, ना कोई स्ट्रगल की है, ये बैठे बिठाए बने हैं। और वो कहते हैं कि इसीलिए इतने ज्यादा आजकल शोखे हो चुके हैं, जिसको कहते हैं, क्योंकि इनको मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये एक्चुअली समझते नहीं है कि आर्टिस्ट बनना कितना मुश्किल है। हाँ, यही मैं बात करना चाहूंगी कि हमारे आर्टिस्ट, जो हमारे इंडस्ट्री के आर्टिस्ट हैं, उनका एक लेवल है। उनके लेवल तक पहुंचना, उनके काम की, उनकी काबिलियत, उनके अंदर का टैलेंट जो है, उनको उस मुकाम तक लेके जाता है। मैं टिकटॉक को स्टार्स को ये नहीं कहती उनमें टैलेंट नहीं है, मैं हर आने वाले नए टैलेंटेड बंदियों का, बच्चे बच्चियां जो न्यू हमारे राइजिंग स्टार्स हैं, सबका ही मैं एहतराम करती हूँ, उनके काम को पसंद करती हूँ, उनके साथ हूँ कि आप लोग अपने टैलेंट को बाहर लेकर आएं। लेकिन मैं इसके साथ साथ चाहूँगी कि हमें इस हद तक ज़रूर जाना चाहिए और इतना सेंस हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए कि आर्टिस्ट
और आर्टिस्ट के बाद लेजेंड्स तक पहुंचना एक अलग बात है, एक अलग लेवल है, एक अलग मुकाम है। चलिए जी, ये तो बात हो गई। हमारे टिकटॉक स्टार्स भी आज हमारे इस इंटरव्यू गुफ्तगू का हिस्सा रहे, लेकिन मेरे सब देखने वाले बहुत सारे मेरे टिकटॉक स्टार्स फ्रेंड्स भी हैं, तो आप लोगों ने ये बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाना कि हम आपके बारे में बात करें। आपको इसी तरह आगे बढ़ना है, अपने टैलेंटेड वीडियोस बनाते रहिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालते रहिए। कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। तो ऐसे है अमीरा, अब मैं चाहूंगी कि हम लोग कुछ आगे बात का सिलसिला बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें। हमारे देखने वाले, फ्राइडे फ्लेक्स के देखने वाले, अमीरा मीर के फैंस कौन से नए प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं आपको? हमारा बहुत जल्दी एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है, क्योंकि पहला सॉन्ग जो हमने किया था वो हमने अपना किया था, लेकिन अब हम चाह रहे थे कि हम कुछ ऐसे सॉन्ग्स करें जो कि हमारी ऑडियंस ने, लोगों ने पहले सुने हुए हैं, उनको हम न्यू तरीके से करने जा रहे हैं। लाइक मैडम नूरजहां के पुराने 70s के जो सॉन्ग्स हैं जो कि हमारी न्यू जनरेशन को नहीं पता उनका, या उन्होंने नहीं सुने हुए, हम चाहते हैं कि उन गानों को भी हम आगे लेकर चलें। सो हम एक बहुत अच्छा मेडले ऑलमोस्ट डन है, और वो मैं अपने स्टाइल से कर रही हूँ। लाइक एक जब यंग जनरेशन की लड़की मैडम नूरजहां के गाने गाएगी तो वो